Am I audible now? Yes, I am. So here we are live now, and there's no one watching. Nice. That's also good. And let's see, system volume is also increased now. And hello, guys, welcome back to Codecules. My name is Harshit, and today is day number 40 of our 45 days of code challenge. And today we will continue with the problems that were remaining in monotonic stack, the difficult ones. And द रिमेनिंग थ्री प्रॉब्लम्स द सेलिब्रिटी प्रॉब्लम जो कि लीड कोड पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है सर और एल आर यू कैशे एंड एल एफ यू कैशे दैट वी विल डू टुडे एंड इन minute we will start. Let me just connect my bird and start the stream on my phone as well. ओके हेलो जोरो आया नहीं प्रद्युमन भाई आई एम रियली सॉरी आर यू देयर इन द लाइव स्ट्रीम लेट हो गया क्या लाइव चैट इतनी देर से क्यों अपडेट हुई रियली रियली सॉरी गाइस आई होप आई एम ऑडिबल आवाज आ रही है ना मेरी ओ, ओ, ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट अ गुड न्यूज़ टू एवरीवन मेरा इंक्रीम ऑफर अपडेट हो गया है सुपर साइट पे स्टार्टेड फर्स्ट अ गुड न्यूज़ टू एवरीवन मेरा इंक्रीम ऑफर अपडेट हो गया है सुपर साइट नाउ वी आर गुड टू गो. So what should we do first? Should we revise the previous problem? Okay, deck के बारे में पढ़ना था ना आज. We are starting a little late today. So yesterday we had solved this problem, which was it? Stock span problem and sliding window maximum, right? And sliding window maximum problem solved तो हो गया था, but we did not know about deck that well. So today we will learn and revise double-ended queue, and then we'll try to solve this problem again by ourselves, and we'll try to cover these remaining implementation problem today. And let's get started. Mm, Starting with the revision of stock span problem. कैब जेमिनाई का क्या हुआ? That is what I was saying कि there's a good news कि कैब जेमिनाई का ऑफर अपडेट हो गया है, इंटरिम ऑफर शो हो रहा है. तो like it's like document verification is remaining only, and once the document verification is done we will get our offer, and let's see what happens. There are still chances that I might get rejected.
So that is why not so excited. Once the offer gets confirmed, we will make a separate video talking about the same. How is the process, how we get updated about the interim offer and things like that. आज कोई पढ़ाई नहीं कर पाया मैं. Like there were so many things I was busy with. So I will be learning back on the live stream itself. Okay. And I will show you how to do that. Okay, it is not visible. Hmm, I first need to minimize. Okay, now it should be visible. But document verification तो सक्सेस ही रहता है, हो ही जाएगा. Let's see. There are slight chances कि क्या पता मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ निकल आए. So I hope that ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. Hmm, we need to learn about double-ended queues. So VS Code ही खोलता हूँ. And on VS Code, first close this. और जोरो को बता दो कि मैं जॉब नहीं करता, मैं बच्चा हूँ. हाँ जोरो, ही इज राइट, ही इज अ किड. किस क्लास में? क्लास 10th में है ना एस जी भाई. टुडे इज डे नंबर 40 एंड लेट्स गो. मैंने भी नहीं सोचा था जोरो. आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट ही इज जस्ट अ किड, 15 years old. Day number 40 underscore day. Let's get started. So today we want to learn about Deque or the double-ended queue. So I will show you one quick shortcut to learn about anything. Where is let's close it. Now here we have our ChatGPT. Now we will ask ChatGPT to write a quick prompt for AI like Copilot to prepare a text file containing a detailed explanation of tech and its implementation in different problems with increasing difficulty and explanation of inclusion and approach to make this is what we did. और जोरो तुम गर्ल निकलोगे नहीं सोचा था मैंने. जोरो लड़की है. That's not true, bro. Hmm,
Okay, and after that, let's just copy paste it into our copilot, and our copilot will do the rest of the work for us. And first, let's create a file name deck learning, add it to the context, use GPT-5 codex as our model, and paste the prompt. जब तक Copilot हमारे लिए टेक्स्ट फाइल बना रहा है, if you guys have any question, you can ask me and we can interact for a few minutes and then we will start learning. Is there anyone new who has joined us for the first time? क्या कोई नया लर्नर है जिसने हमें ज्वाइन किया आज? And Pradyuman, if you are there, bro, really sorry, टाइम नहीं मिला आने के लिए. प्रद्युमन, तुम लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हो. देखो जोरो, ये भी मानने से मना कर दिया. हाँ भाई. So yes, is here. Bro, I'm in my fifth sem and learning DBMS. Can you suggest me a good resource from scratch for SQL? So yes, you ask me every time some different question, and every time you say that you are in your fifth semester, and every time you have a different doubt in completely different domain. Okay, you are learning DBMS. You want some good resources. You can learn from Love Bubber's playlist where he has explained some like वन शॉट्स में ना, कुछ वन शॉट्स में उनने डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं. Okay, let's get started. Our co-pilot has created this file. Let's see if it is visible to you. Yes, it is visible. So let's learn what is a DAG. DAG is pronounced as DAG is a linear data structure that allows insertion and deletion at both the ends, the front and the back, in big of one time complexity. हर्षित ब्रो, वेब डेव कब से स्टार्ट करेंगे? मे बी आफ्टर माय सेमेस्टर एग्जाम्स, क्योंकि अभी मुझे रिमेनिंग टाइम में सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. सो आई कांट बी स्ट्रीमिंग ऑल डे. तो जब मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स हो जाएंगे 7th सेम के, उसके बाद वी विल स्टार्ट लर्निंग एंड शेयरिंग आवर जर्नी विथ वेब डेवलपमेंट ऑल्सो. ओके. एंड अपनी स्पीड स्लो लगती है, लाइक 1 वीक से 1 मंथ में ऐप बना पाता हूँ. ओके. Well, that is not slow speed, buddy. Let's go. So, what is a DAG? DAG is a linear data structure that is done internally. It can be implemented as a circular array, a block linked list, or a doubly linked list. The key design goal is to keep head and tail operations symmetric. Within the hierarchy of linear structures, a deque generalizes both a queue, first in first out, and a stack, last in first out, by constraining operations to one and
you recover those specialized structures. Okay, core operations and behaviors are push in the front, insert element X at the front of the deck, push back, insert element X at the rear. Okay, push front, pop front removes and return the front element, pop back, remove and return the rear element that we know. Peek front, peek back, read front and read without removing. Size, number of elements currently stored in the deck, empty, boolean check for zero elements. These operations guarantee constant time behavior if the underlying representation keeps direct references to both ends. These operations guarantee constant time behavior if the underlying representation keeps direct reference to both ends, either via head or tail indices or pointers. Okay, and it has time complexity, constant time complexity for the three operation push, pop, peek, and size is also constant. Iterating through all elements still cost O of n like any linear data structure, while the DAC can beat stack queues in practice. You avoid data copying when you need both direction expulsion. You can maintain sliding windows efficiently and you can reduce memory churn when toggling between front and back operations. Okay, when to reach for a deck instead of stacking queues, sliding window problems where you repeatedly add to one side and remove from the other. Okay, so the one use case is sliding window problems. Whenever we are solving sliding window problems, we will use deck. Maintaining maximum, minimum, or monotonic order for online data streams. Okay, I don't know what does it mean by online data streams, but we will learn about it. And simulating both ends of sequence, palindrome checks, undo redo buffer. Okay, BFS variations where you push high priority state to the front and low priority state to the back. Okay, implementation details. Mm, uh, language support overview. Array deck Array deck from java.util offer resizable array backed deck with amortized. What does amortized means? Where is our ChatGPT? AMORTI ZET amortized. Okay. Obsolete to make as if dead to destroy. Accounting method that gradually reduce alone learnings in time complexity. Mm, yes, I know, but for once I just wanted to know about it. While some individual operations might take longer, the average time taken per operation over a sequence of operation is constant, even if the worst case scenario for the entire sequence. Okay, even in the worst case scenario, the time complexity will be constant. That is what it means. Mm, okay, array tag, progressive problem set, circular array problem statement builder that supports push pop operation at both ends using a fixed size array. Right.
around indexing vintage stack, you explicitly need a multi operation at both ends without dynamic formal relocation at runtime. To indices front byte that removes modulo that move modulo the array line, reserve one slot to distinguish between full and empty state, or keep a size counter. Yes, ऑपरेशंस तो पढ़ने पड़ेंगे एक बार. और डेक का इम्प्लीमेंटेशन, लाइक हाउ डेक वर्क्स इंटरनली, वो मुझे पता तो होना चाहिए ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले. Implemented deck using doubly linked list. Okay, first negative number. Let's try to solve this problem. Implemented deck using a circular array. I think मैंने circular array के problems भी नहीं किए हैं. Hmm, where is the problem? Operation on deck. Mainly the following four basic operations are performed on queue: insert front, insert rear, delete rear. Front gets the front element from the queue. Okay. Seek front or front ele. Okay. So uh, double-ended queue is a generalized version of the queue data structure that allows insertion and deletion of elements from both ends, front and rear. Okay. It's simply okay. We can do it on by ourselves. Let's try to do that. So implement a deck using a circular array where the size of the array n is given. Okay, the size of the array is given. So we will create this is the constructor. So YouTube में dark mode कैसे करते हैं? Might be there in the settings. Um, equals to and chat is disabled for the live stream. ऐसा क्यों आ रहा है? Chat is not disabled.
but is not visible in the live stream. Pop out the chat. Secret and update the show. Okay, now it is updated. Let's get back. Don't know what happened. ऊपर जो टॉप चार्ट लिखा है उस पर क्लिक करके लाइव चैट सेलेक्ट कर दो. ओके, टॉप चैट. And we need to initialize front. So front will be storing the index of the front. So int front is equals to 0 and size will also be 0. Okay, we have created an array that will store the elements of the deck and initialized the first front and size variables. Now when an element is inserted, we will use this method insert front insert there. So adds an element x at the front of the deck. We will check if the stack is deck is full, not stack, it is deck. So if size is less than and then only we will insert okay, I'm doing it wrong completely. It the array initialization, we will create a private int array and then private variables in front, size and also capacity, and then this constructor will create a separate array every time it is called. So arr is equals to new int of size that is given in the method as argument, and capacity will be equals to n and size will be initially 0, front will be also 0. This is what a constructor will do.
Then we will check if the size is equals to capacity. We will return without inserting anything. And array of front will be updated by the given value and size will increase. mm, in other cases. अगर size capacity के equal होगा तो then it will return and do nothing. Insert rear. And when we are inserting rear, we will create a new variable in its inside. So first we will check if size is equals to capacity. That means the deck is full. That we will return without doing anything. And otherwise we will create a new variable rear is equals to rear क्या होगा front plus size, front plus size and circular कैसे होगा ये suppose this is the given array that we are using. And if the given size is 7 and is equals to 7, so we have created an array of size 7. So size will be 0 initially and capacity will be 7. That means it can store 7 elements at most. C is equals to 7. Mm, and we have created this. And when we are inserting at the rear, front will also be pointing at 0. So f is pointing to this variable initially 0. And initially r is also pointing to 0 or until we create it. Okay. And to create when we are inserting in the front, the elements get inserted into the front and front will get updated or not. Front suppose we have inserted an element here, the front should go leftward. Okay, so how we will get the indexes are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So when we inserted into the front of the deck, the
front will get updated and it should be now pointing to the last index. Okay, so how do we find out? Okay, when we inserted an element, it should get updated to the last index. How do we do that? Then f will be equals to the current value of the front. अगर फ्रंट यहाँ पे होता सपोज सेकंड इंडेक्स पे, तो इट वुड सिंपली मूव टू द प्रीवियस इंडेक्स और द इंडेक्स लेस देन वन, मतलब द करंट इंडेक्स माइनस वन, राइट. अगर थर्ड पे होता तो इट विल मूव टू सेकंड, सेकंड पे होता तो फर्स्ट, फर्स्ट पे होता तो जीरो पे आ जाता. बट व्हेन इट इज ऑन जीरो इट शुड गो टू द लास्ट. एंड so what does it mean? It means it will go to the capacity minus वन, या फिर जो भी साइज है साइज माइनस वन पे जाएगा ये, राइट. करेंटली साइज इज दैट. ओके, एंड व्हाट अदर थिंग इज मिसिंग इन दिस? लेट्स ट्राई. ठीक है, इतना पॉइंट सही है. अगर लेयर से पहले फ्रंट को इंसर्ट करने में भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, दैट इज वी नीड टू अपडेट फ्रंट ना. सो फ्रंट विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटी माइनस वन. कैपेसिटी माइनस वन क्यों होगा? जब फ्रंट इज एट फ्रंट, सॉरी, तुम लोग कुछ बोल रहे हो क्या कमेंट पे? सॉरी. क्या नॉक्स, देयर आर सो मेनी पीपल इन द चैट. पेजू कोड, विनय, विश्वकर्मा भाई, तुम्हारे नोट्स भी डाल दो गिटहब रेपो में, काम आएंगे. हाँ ब्रो, मैं अपडेट करता हूँ. आर यू कमिंग बडी, लेट्स प्ले अ मैच. ब्रो, रेफरेंस के लिए कोड चाहिए. क्या नॉक्स ब्रो, आई विल प्ले आफ्टर 10:30. ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद देन वी विल प्ले. इफ यू कैन कम बैक लेटर वी कैन प्ले आफ्टर 10:30. ओके, what I was doing, कि when the front is pointing at the second index, how we can update its value, and we don't not know that it is pointing at the second one. So front minus 1 will be its previous value, and if it is 0 then we will add the capacity that is it, right. कितना सही रहेगा? So front will be updated as front minus 1 plus capacity and size plus plus. That is done. Insert where, it will update as front plus size. Okay, one more thing.
जब ये सेकंड इंडेक्स पे होगा एंड प्लस कैपेसिटी करेंगे तो इट विल गो आउट ऑफ बाउंड, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी विल अप्लाई मॉड्यूलस विथ we will apply modulus with the capacity. Now it will not go out of bound. ठीक है, ये मिसिंग था तो update it. Modulus of capacity. Okay, and similarly we will add front size with the front and apply modulus with the capacity. Modulus of capacity, and after that we will update the value of where with x, and size will increase. Delete from front. The main operations for circular queue is like that only. And I need to take one. Your life. Okay, so delete from front के लिए क्या करेंगे? We will check if size is not equals to 0. अगर 0 हुआ तो क्या डिलीट करेंगे? Size. There is no element in the deck. So if size is equals to 0, we will return -1. And delete front will return the value also, right? So how we will do that? We will create a variable int result is equals to array of front. Okay, and after that we will update the value of front. Front is equals to front plus 1 and modulus of capacity. So it will avoid us going into out of bound. Mm, capacity and size will reduce, and we will return the result value that we had stored. This is how delete will work. Delete element from the rear. Again we will check if the size is equals to 0, and if size is 0 we will return -1, and after that we will store the rear value in the result variable. Int result is equals to array of rear. After that we will update the value of rear. Rear is equals to rear -1, rear -1 modulus of capacity, right? लेकिन rear क्या है? Rear is nothing but front minus front plus size -1. Its modulus is with capacity. Okay, rear is nothing but
यहाँ पे भी real vertical यहाँ पर we will just return array of real, right? And then get the front element, get the rear element. Buddy, are we only playing Valorant at 10:30 or something else? Kianox, you are talking about Valorant. I was talking about chess. If anyone wants to play chess, then only comment. Valorant मेरे phone में नहीं है. Phone में नहीं, laptop में नहीं है Valorant अभी. And I don't want any complication installing multiple files. Mm, Front element, get the front element. It is simple. Return array of front, return array of front, and return rear element, return array of front plus size minus 1, right? अच्छा ठीक है, इसमें भी वो मॉड्यूलस वाली थी रहेगी. मॉड्यूलस, ठीक है, इसके लिए वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा rear line से. So int rear is equals to bracket में front plus size minus 1, modulus of capacity, right? And then we will simply return element in the array at rear, right? And now we will compile and run it. बहुत सारे एरर आ गए. Not a statement, front plus size minus 1, not a statement. Why 57. अच्छा ठीक है, डेटा टाइप और इसके अलावा let's try to run again. Now what is the problem? Front plus size minus 1, line number 57. अरे कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा दिया? इसके अलावा error not a statement. Okay, line number 41 में error. ओके, यहाँ पे तो रिटर्न कुछ करना ही नहीं. And then unexpected return value on line number 48. इसमें भी रिटर्न ही नहीं करनी है यार, ध्यान ही नहीं दिया. We don't need to return the deleted value. प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना चाहिए. यहाँ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. We just need to upgrade. इसको
तो कंप्लीट किया ही नहीं डिलीट क्लियर वाले को। ठीक है, here size will be minus यहाँ तो रिटर्न करना है। Let's run it. चेस और BGMI चेस खेलेंगे ब्रो। We will play chess at 10:30. अब कहाँ पे है एरर 52 रिटर्न -1। Finally it worked after so many errors. Let's submit it. डबल एंडेड क्यू, पहला ही टेस्ट केस फेल हो गया। क्यों? Your code's output is 4,0. Its correct output is -1 -1 2424. Insert front. There will be a sequence of queries 1 2 3 4 5 6. Insert front X, insert rear X. Okay, Gyanox, wait a minute. Let me just complete this problem and I will share the challenge link because my channel is about coding rather than playing chess. I do play chess after my stream is done. And so what it does, first it will insert the element in the front and then rear, and then delete front, delete rear, and then 3 call delete front, 6 rear element, and then 5 front element. Front, rear, delete rear, delete front. What's wrong with this now? That is full integer is equals to this is for inserting an element. Similar ही है ना, inserting element का कोड भी ऐसे ही था. Insert front, front -1 capacity, okay. Array front ये भी same है. If size is equals to 0, return -1, integer is equals to front plus size -1. Front is equals to front plus 1 and modulus of capacity. Campus update.
Simple solution, ChatGPT. Which title you own in chess? I don't know. I just play randomly. It's just my hobby. I don't play it professionally to win every time. So your dog is almost a perfect little circular beast. There's just one conceptual kink hiding in plain sight. Delete rare, compute the rare index, but never clears moves anything. It technically works because decreasing size discards the old rare, but the unused variable rare is pointless. Functionality, it's correct, yet it feels like leaving a ghost value swirling in the array. Quick sanity run through. Mm, but this isn't used. That's like calling a friend over and then ignoring them. अच्छा ठीक है ये you can remove it and here's a clean version. The array retains stale value but logically removal is correct. But I am getting error जो कि नहीं आना चाहिए. कहाँ गया delete rare. हाँ ठीक है, I am using it unnecessary. Okay, I remove it. But other functions should work properly, no? SG bhai, now tell me what is the mistake that I'm doing. First test case is working, but okay, custom 2, 4, comma 4, and what was the input? Yes, we could do for the colors from my output. Front plus size minus 1 plus capacity. It's getting wrong results. ChatGPT पागल हो गया. ओके, इसके साथ सॉल्यूशन नहीं है.
Yeah, Nox, are you there? 0 back 0 size 0 push front decrement front circularly place x increment size and place x at back circularly increment size on top remove element move pointer decrement size trial one pushing 1 2 3 to back then popping from front demonstrates pointer up around one to fulfill solution इसने तो बहुत ही अधूरा अधूरा सा सॉल्यूशन दे दिया okay the input was incorrect custom input was incorrect there's no problem in the code okay are you there Gyanox Gyanox if you are there we can play a match of chess otherwise we will solve problems the celebrity problem is not available only code problem okay it is now updated go to zero. So the celebrity problem, let's read it. A celebrity is a person who is known to all but does not know anyone at a party. Okay, I am at a party and I don't know anyone, but everyone knows me. So I am a celebrity. A square matrix met of size n by n is used to represent people at the party, such that if an element of row I and column j is set to 1, it means ith person knows jth.
Mm, You need to return the index of the celebrity in the party. If the celebrity does not exist, return -1. What does it mean? A square matrix mat of size n by n is used to represent people at the party such that if an element of row I and column j is set to 1, it means ith person no jth person. Ith row. Hello Rahul, welcome back. How are you? What is up? कैसा चल रहा है डीएसए? Output is 1, zeros and second person both knows first. I'm not getting it. A celebrity is a person who is known to all but does not know anyone. Just करके आ रहा हूँ lead code. Which question you solved today? A party is being organized by some people as a matrix of size n by n used to represent people at the party such that if an element of row I and column j is set to 1, ith person is knows jth person. That means follow zero based indexing. That means there are total 9. There are 9 people, and if we have 1 on 0 0, that means 0 knows 0. If we have 1 on 0 1, that means 0 and 1 know each other. If we have 1 on 1 comma 2, that means first and second elements know each other. If we have not 1 comma 1, that means the first number knows first. Two comma 1, 2 comma 2. Can't understand till given a square matrix of size n by n where I j equals to 1 means person I knows person j, and matrix I j equals to 0 means person I does not know person j. Find the celebrity person where celebrity is defined as someone who is known by everyone else, does not know anyone except themselves. Return. और इस क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं मेरे लीड कोड में. कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल बडी, यू आर डूइंग गुड. A huge shout out to Rahul based on solving 50 lead code problems. Return the index of celebrity if one exists, otherwise return -1.
ये तो एडजेसेंसी एडजेसेंसी लिस्ट से होगा. That is graph and stack. It can be done using two pointer, but problems must add. It is saying return the index of celebrity if one exists. It is guaranteed. Okay. Explanation: zeroth and second person both know first. One is the celebrity input matrix. शॉर्ट आउट करने से क्या होता है? आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए. दैट इज इट. और जो लोग स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं जैसे कि मैं हूँ, मैं कैरी मिनाटी की लाइव स्ट्रीम में जाके बोलूंगा कि भाई शाउट आउट दे दो, तो उसके व्यूअर्स को पता चलेगा कि मैं भी कोई हूँ. लाइक जस्ट टू market yourself on the live stream. आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस सेलिब्रिटी प्रॉब्लम नाउ. अर्लियर आई वाज लर्निंग डबल एंडेड क्यू डेक. यहाँ मुझे इसका क्वेश्चन ही ठीक से समझ नहीं आ रहा. Cute little logic puzzle disguised as a matrix question. It shows up on lead code, also famously on GFG, and tests your ability to prune information cleverly. Information ही तो समझ नहीं आ रही है. Imagine a party full of people, each either knowing or not knowing each other. Among them, a celebrity might exist, someone who is mysteriously well known but knows no one. A paradoxical creature like a social black hole. Okay, you are given n people labeled as 0 to n minus 1. You also have a function knows AB. Knows AB equals to true means person A knows person B. If there is a celebrity C, then everyone knows C. C knows nobody. In a matrix form, that's row of celebrity is equals to all zeros, column of celebrity all ones except diagonal. Okay, the task is to find the celebrity or return minus one. ये तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया. The elegant solution uses a two-pointer elimination game, like a social version of the prisoner's dilemma. Imagine lining up all people. You hold two pointers. If I knows J, then I cannot be celebrity because celeb knows no one. So eliminate I and I plus plus. सर जावा को कंप्लीट डी समझना है मैंने, अब क्या करूं? लाइक समझ लिया है या समझना है? व्हाट डू यू मीन, राहुल? This leaves exactly one candidate after one comparisons, but this candidate is not guaranteed, yet they might be a poser. ओके, बेसिक्स कितना हो गया? लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट हो जाएगा. लाइक एरे और स्ट्रिंग्स के बेसिक्स पढ़ लिया क्या तुमने? अगर इफ यू हैव लर्नड अबाउट द एरे एंड स्ट्रिंग questions, start solving those problems, and after that learn about collection frameworks.
matrix is okay. This is the given matrix, and I is equals to 0, j is equals to 3, 0 knows 3. Okay, so actually number of people is only n. मैं वहीं confused हूँ. A party is being organized. A square matrix n by n is used to represent people at the party such that if an element of row I and column j is set to 1, ith person knows jth person, you need to return the index of the celebrity. Okay, there are three persons in the party only. Okay, so if there is given n by n matrix, that means there are three people. 0 0 is 1, that means, and a celebrity is someone who knows himself only. हाँ ये तो कर लिए, लेकिन इन्हें और डीप से लर्न करना है. अगर इनको और डीप से लर्न करना है, फर्स्ट कंप्लीट दिस चेकलिस्ट. अगर इनको आगे और कंप्लीट करना है तो मैं आई थिंक मैंने नोशन का एक्सेस दिया था तुम्हें. लेट मी शेयर. नोशन दिख रहा है ना सबको? लेट मी शेयर वन मोर थिंग. PSA. Here's the DSA roadmap, and this is the checklist. ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था. That I am pasting in the GitHub file. You can learn get it from there, and I will also share this list. जैसे कि ये level 1 DSC की checklist है. इसके अंदर easy problems हैं level 1 वाले. तो once you solve these problems, जैसे कि most frequently asked और important problems हैं time complexity से related, like पहले topic से related कुछ important problems हैं. ये तो छोड़ो, basics हैं. रिकर्जन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, रिकर्जन के बारे में पढ़ो, उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. उसके बाद ये कुछ एडवांस प्रॉब्लम है, अगर बनते हैं तो करो, नहीं तो स्किप करो. आफ्टर दैट सॉल्व एरेज. एरे के 10 इजी प्रॉब्लम्स करो, ये जो लिस्ट है इसमें से. आफ्टर दैट स्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड देन मैथमेटिक्स एंड बिट मैनिपुलेशन के यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. दैट इज हाउ यू गेट इनटू द डेप्थ. दिस इज द ओनली थिंग. And what second, that is all VS Code, and I'm creating a file named DSA roadmap. You can get it from the GitHub repository, okay, on my GitHub profile. So DSA roadmap, okay, and I'm pasting it here. तो ये पूरा जो रोड मैप है यहाँ पे गिवन है, और हर टॉपिक से रिलेटेड अराउंड 20 to 30 प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड you will get it done, right? अरे बहुत बढ़िया है सर. वेलकम वेलकम चौधरी जी.
Mm, and let me commit. Today is day 40 commit with TSA roadmap. Thank you so much, Parv Bhai, and all the best. Thank you so much, Bhai. Mm, Now, as we know, the celebrity problem, let's try to solve it by ourselves. So, let's see. We just have n number of peoples in the room. Let's say this is the matrix. In which company you got placed? ब्रो अभी प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है बट इंटरिम ऑफर आ गया है कैब जेमिनाई का सो दैट इज द केस ओके नाउ व्हाट इट सेज दैट if let's mark the हाँ बट स्टिल देर आर चांसेस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो शायद नहीं होगा आई कांट से एनीथिंग मतलब अभी कॉलेज से कोई ऑफिशियल लिस्ट तो नहीं आई है प्लेस्ड स्टूडेंट्स की तो आई एम अज्यूमिंग के there is still something remaining 0 1 and 2 this is the number of person and this is called this is row number 0 1 and 2 and क्या करना चाहिए चैट जीपीटी और नोट्स उठाओ जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी उसके और सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे तो मिड सेम है कुछ दिन बाद मैंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा आई विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुमारो कल मेरा टेस्ट है एक कंपनी का डेलॉइट का ओके डेलॉइट की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी आज मुझे आई एम मिसिंग आउट नेक्सस इज सेइंग अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया और कोई बात नहीं ब्रो मे बी समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू डोंट लूज होप कीप प्रिपेयरिंग क्या पता टीसीएस प्राइम लग जाए है ना ओके वमसा इज बैक हाउ आर यू बडी लॉन्ग टाइम नो सी व्हाट इज गोइंग ऑन if ij is set to 1 that means ith person knows jth person so if on 0 0 so much of cold and fever get well soon bro
जॉब लग गया क्या? अभी जॉब तो नहीं लगा है, ऑफर लेटर आना बाकी है. सो व्हाट आई वाज सेइंग, व्हेन द इंडेक्स इज 0011, ये ना करके आई शुड टाइप व्हेन 0, 0 and 1, 1 and 2, 2, 2. These are all potential celebrity because they know themselves. Okay, अगर diagonal elements पे 1 होता है तो that means they just know themselves only, क्योंकि 0, 0 को point out कर रहा है, 1, 1 को point out कर रहा है, 2, 2 को point out कर रहा है at this point. Now when we see this, we see what? 0, 1. That means 0 knows 1 and 1 knows 0. Buddy, your face is glowing. Thank you so much. Nexus is saying hopes are low from my college as long as I know इस बार इधर mass hiring नहीं आ रही. Don't know what's going to happen. Okay, you retracted. Bro, why you deleted that message? I was reading it. And crazy. Bro, don't get demotivated. हमारे कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही सीन था, बट स्टिल कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही हैं. सारे कॉलेजेस में यही सीन है. सारे कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी डाउन है, तो वी हैव टू बेयर इट. एंड आई थिंक कि मतलब इवन इफ द अपॉर्चुनिटीज़ आर लेस, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं. आई थिंक इंटरव्यू वाले दिन शायद तुम्हारा दिन अच्छा नहीं रहा होगा, बट बी प्रिपेयर्ड. जैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बी प्रिपेयर्ड. अगर तुम अभी से सोचने लगोगे कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं है, कॉलेज में कुछ होगा नहीं, नेगेटिवली सोचोगे तो नेगेटिवली होगा. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, बी पॉजिटिव, कीप वर्किंग. एंड इवन इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन ऑफ कैंपस इन एनी कंपनी, यू हैव टू हैव स्किल्स, राइट? तो अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्किल सेट पे काम करते रहोगे तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. So don't get demotivated, right? 0, 1 means 0 knows 1, ith person knows jth person. That is the only thing. So, bro, I'm applying for intern off campus, but reply नहीं आ रहा. कोई बात नहीं. Make your resume better, improve your resume. Here, mm, what is happening? It's 11 now. I think Accenture intern is also starting. Can you guide me, please? You can apply into Accenture, but I have heard that Accenture does not give joining. Intern के लिए अच्छी है, but it's not good for getting placed, क्योंकि last year जो लोग Accenture में place हुए थे उनको joining letter ही नहीं आया, I think.
Nexus is saying मेरी प्रॉब्लम है I know how to approach the question but when I start to code I got problems and eventually I get problems. Bro, let me tell you, the solving coding problems and problem solving skills is the next step. जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं इनिशियली दे जस्ट आस्क फॉर गुड एप्टीट्यूड, ईदर गुड एप्टीट्यूड और फंडामेंटल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, राइट? तो स्टार्टिंग में सिर्फ एरे स्ट्रिंग और लिंक्ड लिस्ट तक के प्रॉब्लम्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑन दोज टॉपिक्स जो कि सर्विस बेस्ड कंपनीज पूछती हैं रेगुलरली, राइट? और बस उतना ही करो एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, ओके? एंड डोंट गेट स्टक इनटू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लाइक अगर सॉल्व नहीं हो रही हैं तो सी द सॉल्यूशन और सॉल्व प्रॉब्लम रेगुलरली। हम क्या करते हैं कि लाइक रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, आज सॉल्व किया कल सॉल्व नहीं किया, उसके बाद में 2 दिन बाद ब्रेक लेने के बाद सॉल्व किया, तो ऐसे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, हम कुछ भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था। दैट इज़ व्हाट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस नेगेटिवली, राइट? एंड बी एक्टिव, कि जब भी टेस्ट होते हैं उनको एक्टिवली तो if A knows B then A can't be a celebrity. Okay, I did 2 questions now. Going to sleep. Bye. Okay, Zoro. Bye bye. Thank you for sharing your update. How many days are enough to practice enough basic required problem if I start again to prepare myself and I got a long break after I failed in Capgemini interview because I demotivated? Bro, I would say कि 1 से 2 हफ्ते are enough, like 2 weeks are enough to revise whatever you have studied earlier and previously, okay? And जो बेसिक्स है ना, लाइक ट्राई टू गिव 2 to 4 hours फॉर ईच टॉपिक, जो मैंने लाइक रोड मैप शेयर किया ना, उसमें जो बेसिक्स, लेट मी टेल यू द बेसिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सी, बस लेवल 1 एंड लेवल 2 करना है तुम्हें। ये जो मैंने गिटहब वाली फाइल में ये डीएसए रोड मैप बनाया है, उसके अंदर ये जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो टॉपिक्स हैं ना, बस इनको कवर करना है। तो इट विल टेक 2 weeks ओनली। हर दिन एक टॉपिक को लो, उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड 20-30 प्रॉब्लम्स करो। दैट इज हाउ यू कैन डू इट, ओके? एंड देर इज नो लाइक शॉर्टकट। अगर तुम्हें लाइक सीरियसली करना है तो पुट इन हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट, सॉल्व रेगुलरली। बस 14 days के लिए अगर कंसिस्टेंटली 2 to 4 hours रेगुलर दोगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना मैंने पढ़ा ना लास्ट 2 मंथ में, उतना कंपनीज पूछते नहीं है। लाइक इट्स जस्ट लक फैक्टर भी एक पॉइंट होता है। इट्स जस्ट के तुम्हें ना जब वो पूछ रहे हैं उस टाइम पे तुम लाइक कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ। लाइक व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू you should be able to confidently answer that basic easy questions only, right? And sometimes it's on luck also, कि जो 20 minutes होते हैं। हाँ राहुल, ठंड शुरू हो गया है हमारे यहाँ।
20-30 problems are too much. As I told you, I'm slow when it comes to solving. It's okay. I जस्ट मेंट कि अगर तुम्हें मास्टर करना है ना किसी टॉपिक को तो 20-30 प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे. एंड इफ यू आर स्लो, लाइक इफ यू फील्स के तुम्हें मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, तो टेक डबल टाइम. ट्राई टू सॉल्व 20-30 प्रॉब्लम्स इज सीरियसली हाई. जस्ट ट्राई. लेट मी टेल यू. लेट मी टेल यू. देखो, अगर इफ यू सॉल्व लेवल 1 problems only in 10 to 15 days, then you will be able to solve all the problems asked by any service based company, right? And if you want to be assured के मतलब उसके हायर पैकेजेस के लिए भी तुम एलिजिबल हो पाओ और उसके इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओ, तो यू विल हैव टू सॉल्व लेवल 2. लेवल 2 थोड़ा एडवांस्ड है, मत करो. बट जैसे कि लीनियर बाइनरी सर्च, लाइक ये सिंपल एल्गोरिदम्स हैं, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन, मर्ज, क्विक शॉट, ये इनका कोड तो अच्छे से आना चाहिए. देन मैथमेटिक्स एंड बिट मैनिपुलेशन के एटलीस्ट 5 to 10 प्रॉब्लम्स तुम्हें आने चाहिए जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं. सिमिलरली स्ट्रिंग के, लाइक आई वुड जस्ट टेल यू कि रिकर्जन से स्टार्ट करना, सिंपल लॉजिक बिल्डिंग से. और रिकर्जन के बेसिक 5 to 10 प्रॉब्लम्स करना. 5 to 10 प्रॉब्लम्स, और ये एक दिन में हो जाएगा. ओके, मतलब टेक 2 days इंस्टेड 3 days. ओके, 3 दिन में अराउंड 9 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व करना. ओके, इन 3 days. ओके, आफ्टर दैट 3 दिन में एरे के कुछ प्रॉब्लम्स करना मैं बताऊंगा, जो 10 to 15 सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो कि रिपीटेडली सर्विस बेस्ड कंपनीज में पूछे जाते हैं. टेक 4 days ऑन एरे. एंड फॉर सॉल्विंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के लिए मेरा एक वो डे 22 वाली लाइव स्ट्रीम है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है. देयर यू कैन लर्न अबाउट स्ट्रिंग्स. टेक 4 days इन स्ट्रिंग्स. एंड देन मैथमेटिक्स एंड बिट मैनिपुलेशन के 5 to 10 प्रॉब्लम्स करने के लिए 3 दिन लेना. एंड देन सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए 4 दिन लेना. और उसके बाद में सर्चिंग एल्गोरिदम के लिए 3 दिन लेना. तो इट विल बी टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 3, 11, 14, 14 and 4, 6, 14 and 4, 18 and 3, 21. It's 21 days only. Okay. Okay. I will update. I have updated it already. PSA roadmap update. Yes. Sync changes. Okay. So yes, it is not showing in GitHub. You can get it. रुको. I can share it in the comment section itself. Okay, it is too long. Mm, you can go to my GitHub profile. GitHub profile is this. Okay, showing you how where you can get it. ये GitHub profile पे जाना. This is my GitHub profile, and this is the link. Okay, click on this link. Go to my profile, and after that, click on 45 days of code. Okay, inside it, you will get uh, this 45 doc फाइल लाइक फोल्डर. इसके अंदर जाना. इसके अंदर जाओगे तो नीचे यू विल गेट DSA रोड मैप ऑन बिलो डे 40. ओके, ये DSA रोड मैप पे क्लिक करोगे, यू विल गेट दिस रोड मैप. ओके, आई होप यू गॉट इट राइट.
Why our stream is not getting good reach today? GitHub से होता क्या है, वर्जन कंट्रोल होता है ब्रो. व्हेन यू आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड देयर आर मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, इट क्रिएट्स ब्रांचेस के सब. एक मेन ब्रांच होता है. इट्स लाइक, लेट मी शो यू. When you are working on a project, it works as a version control system. Suppose this is the main branch, मतलब जहाँ पे काम करना, like this is the actual project, और there are multiple peoples working on different branches. Okay, तो सबका कोड अलग होगा. Suppose there is someone named A, there is someone named B, there is someone named C, this is someone named D. देर आर फोर प्रोग्रामर्स, और ये मेन कोड है. जो एक्चुअल कोड है प्रोजेक्ट का वो ये है. तो ये चारों क्या करेंगे, ये मेन कोड को अपने लोकल सर्वर पे कॉपी करेंगे पहले. ओके, लोकल सर्वर पे कॉपी करेंगे एंड देन दे विल अपडेट दिस कोड. एंड मतलब उन्हें जो भी चेंजेस करने होंगे, अपडेट्स करने होंगे, वो अपने लोकल सर्वर पे करेंगे एंड देन दे विल पुश इट टू द मेन ब्रांच. ठीक है. तो इसका जो भी कोई ओनर होगा या मॉडरेटर होगा, ही विल चेक द चेंजेस. ओके, क्या लिख रहा हूँ मैं. इसका जो भी कोई ओनर होगा, ही विल अप्रूव द चेंजेस. ठीक है, मतलब ए बी सी डी, ये तीनों चारों जो भी चेंजेस क्रिएट करेंगे, ही विल अप्रूव देयर चेंजेस. अगर उनके चेंजेस करेक्ट होंगे तो ही विल ऐड द चेंजेस इनटू द मेन ब्रांच. और इस ये सब करने के लिए गिटहब हेल्प करता है, गिट एंड गिटहब. ओके, एंड यू विल लर्न मोर अबाउट इट यूजिंग some tutorial. And what I was saying, if 0 is there, मतलब I got the answer. कोई भी I कॉमा j का मतलब क्या है? I कॉमा j means let's say I comma j is equals to 1. If it is equals to 1, mm, if it is equals to 1, it means that I knows knows j. Okay, and and it implies that I cannot become a celebrity. Okay, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर on any row, like on zeroth row, if on zeroth row, on ith row, any number is 1 other than I I itself, then it can not become a celebrity, right?
So how can I write the solution to it? Oh shit, my phone is shutting down. I did not realize कि मेरा phone discharge हो गया and it shut down. Okay, let's solve the problem. So the simple intuition is भाई हमारे एक सर आए हैं, वो जावा में मास्टर लेवल तक नॉलेज है उन्हें, लेकिन उन्हें कुछ नौकरी नहीं मिली, तो हमें कैसे मिलेगी? ब्रो, इट्स अबाउट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तुम सिर्फ जावा पे काम नहीं करोगे, यू विल बी वर्किंग ऑन डाइवर्स टेक स्टैक। सिर्फ जावा पे काम नहीं कर रहे होगे तुम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप आई एम ऑडिबल because my phone is dead now, so I don't know if my voice is clearly audible or not. So let's get back to the problem and solve it. Okay, 700 minutes. Wow, 600 minutes means 10 hours. Okay, so how we can come up with the solution and return the answer? The problem needs the answer if there is a row in which the I comma 0 is 1, if 4 int I is equals to 0, I less than int n is equals to matrix of 0 dot len, and int m is equals to matrix dot len, right? Okay, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, इसको m करते हैं, इसको n करते हैं, and while I is less than n and I plus plus, I know इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So why am I solving it like that? What are the possible approaches? Using two pointers, we can do that. O of n, big of n, using adjacency list. Adjacency list. शायद वही सॉल्यूशन मैं सोच पा रहा हूँ, adjacency list वाला, in which we will use two for loops, for int I and for int j is equals to 0, j less than n, j plus plus. Now we will check that
if if matrix of I comma j is equals to 1। भाई आपको नींद आ रही है क्या? शायद, बट नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। I will sleep on time। नींद आनी तो चाहिए, मैं सोया नहीं हूँ काफ़ी देर से। It is fine for today। Okay, if matrix of I comma j is equals to 1 and what else we need to check? I is not equals to j, I is not equals to j, what am I going to do? We know that when I is equals to j, it cannot become for I to become a celebrity, it should not contain ones on places other than I comma I. So for every row we need to check we need to check if there is one on places other than I comma I, right? And is it possible that there are multiple number of celebrities? If okay, we need to return single celebrity, right? Hmm, chalo for ith row, if I is not equals to j and matrix of I comma j equals to 1, then we will return I. Okay, diagonal elements we counted. Is it that simple? भाई आपको एथिकल हैकिंग आती है क्या ब्रो? मुझे तो नहीं आती, बट देयर इज समवन इन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर जिसका नाम है SG भाई, उसको आती है। यू कैन आस्क हिम टू हेल्प यू आउट। मेरा फोन मर गया। Okay, if it is the case, we will get found is equals to I and wait,
After that, we will join found. Let's run it. Diagonal elements के one होगा चलेगा, but if there is one on, आपने अपने कमरे को पहले से ज़्यादा डेकोरेट किया है, हाँ थोड़ा सा. It should look like a YouTuber's studio. कोशिश की है थोड़ा इम्प्रूव करने की. Now my output is 2 when it should be 1. Why? 1 1 0. So when I and j is not equals to 0 and 1, okay, it is not I. That means 0 not it. And on jth column, for every row we need to check if honest Eddie. दीपांशु तुम्हारे मेहमान नहीं है. For every row I need to check if दो बार मैं गैस नहीं किया तो गाली दूंगा. रिपोर्ट करवा दूंगा. कौन हो भाई आप? सामने आओ. फेक आईडी के पीछे क्यों छुप रहे हो?
Let me think of the solution. अंकित नागर एक बार में कर दिया गैस। चलो लगे रहो। मैं ब्लॉक करने वाला था तेरा को। Okay, where is it? We need to test each one. Let's say int form की जगह here we create a boolean knows बता तो दिया मैंने। Honest lady अंकित नागर knows someone is equals to false and boolean known by all is equals to true. Okay, right. Now for J, if matrix of I and J is equals to 1, good morning, Dipanshu. अरे are you steamer? Sorry. The one and only. Second time मैं guess कर दिया. Dipanshu. Matrix of I, J is 0. Sorry, 1. That means I किसी को जानता है तो knows someone हो जाएगा true. Knows someone will become true and we will break. Okay. And if I knows someone continue, and if everyone knows I अपने फ्रेंड को नहीं पहचान पा रहे आप सारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते 4 int I is equals to 0 I less than एडवांस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर बॉयकॉट and I was pro if
k and k plus plus if k is big of n में। अभी तो मेरे को नहीं आ रहा समझ कि कैसे सॉल्व करूं, मेरे को ब्रूट फोर्स तो सोचने दो पहले। if I knows everyone, everyone knows I, तो k के लिए क्या होगा? K is not equals to I and matrix of k comma I will be equals to 0, right? And we will update known by all as false. Break, and after that, if known by all is true, known by all is true, we will return I. Found the celebrity. If we could not found the celebrity, we will return -1. Let us run it. क्या होगा आपके भाईचारा ऑन टॉप का? आंसर गलत आएगा। यू, अभी भी गलत आ रहा है। J will run till M. दीपांशु रेड। बस 8 लोगों के साथ। हम्म, ये बक्सर क्यों खेलना? दीपांशु रेड। Someone screw break. No, someone continue. अगर he knows someone, that means I cannot be a celebrity. अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है? What is the problem? Cannot find symbol.
There is an यहाँ n नहीं n है there is no n. Your output is -1, expected output is 1. स्टैक से तो हो जाएगा बट मेरे दिमाग में जो अप्रोच आ रही है वो तो सही से रन करे पहले. HTML में करूँ. मुझे तो HTML आती ही नहीं. एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ आज. ओके बाय बाय. Okay, 4% every row contains at least one instance to the diagonal. You put with self-knowing as knows someone which eliminates all candidates. Mm, J is not equals to I. Here is the catch. I is not equals to J. अब तो वर्क कर जाना चाहिए. Okay, it works. Finally, एक क्वेश्चन हो गया आज का. Okay, bye bye guys. I'm also ending the stream here only. आज कुछ खास कर नहीं पाए सॉल्व बट इट्स ओके. विल सी यू टुमारो. चलो भाई गुड नाइट. एक दो वीडियो और देख के अपने आप को और डिमोटिवेट करता हूँ अपने आप को. डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ. अच्छा ठीक है. बाय बाय एवरीबॉडी. सी यू टुमारो एंड लेट्स गो.